Good We are now afternoon, live. everyone. Good afternoon, everyone. And today we are going to have a very prominent cardiologist from the holy city of Amritsar with us. What we are going to discuss is a very generic topic, health. And everybody says health is wealth. But the paradigm is that from a hunting civilization to a harvesting civilization, we are in a cyber age. And food, which was available as and when in the hunting area, is in abundance today. And then there are fads like keto diet, intermittent fasting, what all and what not, and so many myths which the WhatsApp University has brought to our lives. So today I have a very, very interesting person, one of the person whom I have known personally and have worked with also, as I said, from Fortis Escorts Hospital, Amritsar, Dr. Arun Chopra is Director Cardiology there. Having done his MBBS and MD from Government Medical College, Patiala, he did his DM Cardiology from the most prestigious All India Institute of Medical Sciences. Post his stint in AIIMS itself, he has been working with Escorts Hospital, Delhi, and then migrated to Amritsar to save lives in Amritsar, which he has saved millions, I would say, and has more than 22 years of experience to his credit now. If I start talking of the numbers of procedures he has done, I'll be faltering on numbers because those would have been thousands. But I know that he is. But I know he has his passion towards interventional cardiology and electrophysiology. He's been part of numerous international and national conferences as course directors and many more important positions. Has a passion for research, has been part of editorial secretary of Official Journal of Cardiology Society of India and Electrophysiology Journal of India, and has again thousands of publications to his credit in national and international journals. I welcome you, sir. Thank you. Thanks, Gaurav, for the kind words. And it was a great time when we used to work together. But it's good to see how much you have achieved after joining in your new venture. And we are very pleased and proud to see you doing so well. Thank you so much, sir. So, sir, let's start with the basics. What is health? Health hai kya? What is health and fitness? So that's a extremely important question. So जो technical definition है, technical definition of health as given by World Health Organization is health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ये 50 साल पुरानी definition है. So this definition tells us that it is not merely the absence of disease which defines health, but other things, not just physical health, but social health, mental health. So everything should be good, and then one is considered healthy. On the other hand, fitness is a concept which means the ability to do a particular activity. So a person is fit, so he can do all his normal work. He can walk 5 kilometers briskly. He can walk two flights of stairs. But if we ask him, is he fit to climb a mountain? He may not be fit enough to climb a mountain. So fitness is different from health. It depends upon what your goal is. And the basic point of fitness and health is that in trying to achieve a particular level of fitness, one must not sacrifice on health. And this is why what food to take and what sort of exercise to do becomes extremely important, because there are some exercises and some diets which may be extremely good for fitness, but they may not be great for overall health. So our aim is pursue health in totality and pursue fitness to a moderate level, which does not undermine your health. So I hope these two concepts are clear. Very, very crystal clear, sir. So taking advantage of being one of the most renowned cardiologists, at least I know, right? I would want to understand that we keep on saying that heart attack risk is increasing in our country. Many young patients are also getting heart attacks, sudden cardiac deaths. We have seen a very famous singer collapsing on the stage, sudden cardiac death, and we blame it all on our genes. Is genes the only thing, or there are other things also which are impacting this? Especially when we say of diet, stress,
lifestyle, exercise? So, two, three parts to this question. Let me address the first one. First is the young age at which we are finding these heart attacks increasing. So, the first part is, statistically, we are a huge country. Our population is something like 135 or 140 crores. So, obviously, the number of young people is also huge. So, if a particular sample size is small, they will have a smaller number of events. If the sample size is, let's say, 100 times greater, there will be more events. So a small country which has a population of maybe 10 CR and we have a population 14 times as much, we will have 14 times as many events in any age group than they have, broadly speaking. The other thing is that we are almost 1/4 of all heart attacks below the age of 40 and nearly 40% to 50% of heart attacks below the age of 50, because our average age of getting the first heart attack is some 9 years younger than the first heart attack in the Western world. So if we look at USA, if we look at Europe, typically their first heart attack is around 60 or later. Whereas in India, the age of first heart attack, as on average, is around 51, 52. This is a huge problem. Now, coming to the second part of your question, which is whether it is diet, whether it is genes. So the answer is both. Because see, genetically, we are more predisposed to heart disease. We are more predisposed to diabetes. Even with a minor weight gain, Indians are much more likely to become diabetic than a Western person, a Caucasian person. So our risk of getting heart attack is extremely high. If we look at Indians settled in US or in Europe, their risk of heart attack is even higher than Indians living in India. So environment definitely has a role to play, but along with genetics. So if you have high risk genetics, which means half the key is genetics and half the key is your environment, which means diet, lifestyle, exercise, etc. So obviously we are at high risk. So if we have to grade, Indians living in India are at higher risk than Americans living in America. But Indians living in America are at higher risk even than us who are living in India. So therefore, it is not that it is only genetics. Environment definitely has a role to play. And if we take care of our diet and healthy lifestyle, we can definitely reduce our risk of getting a heart attack or stroke or other health issues than somebody who has never thought about it. Right. So why do you say that the Indians living abroad even have a more chance of getting a heart attack than what Indians living in India? That is because their diet is even worse than ours. Now, see, the difference is probably gradually coming down because now our diet is also pretty westernized. We do not take the diet which our parents used to take or their parents used to take. Our diet has become much more rich. Then see, in earlier times, people were used to having only 2 or 3 meals a day because see, they would be working throughout the day and they would not be able to have food there. So they would come home and have food. So most of our grandfathers probably took 2 meals a day, a breakfast and an early dinner. Now see, that situation has changed, especially after the COVID pandemic. Now Zomato and Swiggy are everywhere. There are coffee shops, restaurants everywhere. So you just have to think food. In fact, you don't even have to think food. You just have to open your mobile phone or your laptop and you will have ads. If you check your mail, you will have ads from Zomato, from Swiggy, from other restaurants in your neighborhood, wherever you live. And you will unnecessarily eat food. And I think one thing which has really been become very popular is this small frequent meals myth. This small frequent meal is not great for everybody. It is good for some specific subsets of people. So one is athletes. So this probably came into play for people who were into weightlifting or bodybuilding or who were into very high pressure sports, because they have to develop a specific type of muscle or a specific type of energy. So
For them, small frequent meals 5 or 6 times a day was good. I'm not sure it was healthy. Like I told you, there is a difference between fitness and health. That was maybe for fitness. But if we look at small frequent meals for people like you or me, who will be for more than half the day working in an office or working in a hospital and exercising for maybe 45 minutes, 1 hour a day, 4 or 5 times a week, we don't need 5 or 6 meals a day. I'm sure you know this and I know this. We both have had problems with overweight and we have both tried to overcome them in our own way. You know this, that if we take 5 or 6 meals, there is no way you can eat more and lose weight. Absolutely, sir. So it is not a good idea. This has been made very popular by dietitians. 5 or 6 meals a day. People can bring 3 or 4 tiffins to their office. I wonder when they work if they are having 4 or 5 meals a day in the office. Don't mind my saying. Completely agree, sir. And now when you have picked up this topic, let me flip you. What is there any advantage in intermittent fasting? Because that's the complete opposite of small frequent meals. So what's your take on that? Agreed. So very important question, and this is controversial, but I will tell you my considered view. So this is controversial because mainstream belief is that you must have at least 2 to 3 meals a day. That is necessary for health. But otherwise, intermittent fasting has lot of data now to back it up. Intermittent fasting is of several types. There are 2 broad types of intermittent fasting which are recommended. One is decreasing the frequency of meals or concentrating the number of meals in a particular number of hours. This is called time restricted eating. So जैसे आपने सुबह लेट से 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक या 1 बजे तक 2 meals खा लिए and then you have nothing solid for the rest of the day. Rest of the day you have either liquids or something very light which you can digest easily, or you can just restrict your eating to between, let's say, 2 o'clock to 8 o'clock in the night, in the evening, and then not have anything throughout the day. So this is one regime which is followed. Another regime is the so-called 5-2 regime. That 5 days a week you have a normal meal. 2 days a week you have a very restricted meal. That means 500 calories per day. So both of them come to more or less the same number of calories roughly over the week, and they are both good for for weight loss as well as for general health. See, the basic point of why this has become popular is because what we find is Indians are very insulin resistant. जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हम थोड़े से वेट गेन के साथ ही डायबिटीज बन जाती है, हमारी डायबिटीज डेवलप हो जाती है. सो व्हाट टू डू फॉर दैट? वी हैव टू बिकम मोर इंसुलिन सेंसिटिव. दैट मींस आवर इंसुलिन रेजिस्टेंस हैज टू डिक्रीज. उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि मतलब समहाउ इंसुलिन लेवल्स हैव टू फॉल डाउन. अगर इंसुलिन लेवल्स बॉडी में कम होंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. बेसिक पर्पस ये है. हाइपर इंसुलिनीमिया प्रमोट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस विच प्रमोट्स फर्दर हाइपर इंसुलिनीमिया. ठीक है ना जी? सो व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस इंसुलिन लेवल्स? वन इज मीठा अवॉइड करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, बट मेनली मीठा अवॉइड करो. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करो, कम करो, विच मीन्स व्हीट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह. थर्ड इज एक्सरसाइज करो. You should exercise a lot. That also improves insulin sensitivity because your muscles consume glucose when you are exercising. So insulin sensitivity बढ़ती है. Then you can increase the interval between meals. क्योंकि एक बार जब आपने खाना खाया, it takes about 10 to 12 hours for serum insulin levels to become normal. So this is my biggest problem with the small frequent meal diet for normal people like you and me. Okay, if you keep on consuming meals all the time, then what is going to happen is that your insulin levels will always remain high. Your insulin levels will never come down. On the other hand, if you give a gap of 8 or 10 hours between your meal,
then your insulin levels will come down. You will become more insulin sensitive, and losing weight will be easier for you. So my idea is that within reasonable limits, under some medical supervision, intermittent fasting can be useful. Of course, it is not for everyone as a blanket statement. उसमें दो caveats are important. One is diabetic individuals. Diabetic individuals, if they have to increase the gap between their meals, they must consult their doctor. They can't do this in an unsupervised fashion because we don't want कि वो दवाई खा लें फिर उसके बाद वो खाना ना खाएं and they become hypoglycemic. The second subjects which should become careful are females, especially post-menopausal females. Males tolerate intermittent fasting much better than females. So it is very important that you must consult again as a female, especially post-menopausal female, you should consult your doctor before starting. Third is, of course, children. They don't need this. They should monitor their diet in other ways. And of course, athletes will need too many calories. They can't do this. But broadly speaking, two categories must be careful. One is diabetes and the other is postmenopausal females. They need to be careful because postmenopausal females generally can't fast beyond 12 hours. They need to have something more often than men. Men can do this much better. The reason this has been criticized is not because intermittent fasting in itself is bad, but what people are trying to say is that it is actually the caloric content rather than the fasting which makes the difference. What they try to say is that if you are able to eat the same number of calories in 3 meals a day, the results will probably be similar. So this is very hard to prove or disprove. But there is good data to show that some of the biggest predictors of long-term survival are your net calorie intake. And most people seem to feel that intermittent fasting helps them cut down calories more than routine dieting. So this is my take. You can do this. So thanks for such a lucid explanation of intermittent fasting. और आपने इतनी बार calories को बोला है. तो now my next question to you is, I have seen people going literally crazy on calorie counting. They'll have an app downloaded. Every food they're going to eat, they'll pick up a picture and then say, "Oh, मैंने तो इतनी calories खाई," and that can drive people around them also crazy. How important is calorie counting, and is there a simple ways of regulating your calories? Very interesting. So I wrote an article on this. In fact, 2 articles on this. Are calories the only thing? So, well, calories are very important. Not to say that calories aren't important, but they are not the only thing. So let's understand why this is so. Calories are important because ultimately, if you compare your net calories consumed with your body weight, generally there is a direct correlation between total calorie intake and body weight. So हम एक दिन की बात नहीं कर रहे. We are talking about, let's say, a month or a year. So what you have to understand is all calories are not created equal. ठीक है ना? अब जैसे एक कैलोरी है फ्रूट में, एक कैलोरी है सैलेड में, एक कैलोरी है सब्जी में, एक कैलोरी है आइसक्रीम में, एक कैलोरी है बिस्किट में, एक कैलोरी है कोल्ड ड्रिंक में. सो दीज आर ऑल डिफरेंट. सो उनका जो मेटाबॉलिक इम्पैक्ट है दैट इज वेरी डिफरेंट. अब सपोजिंग आप आधा किलो सैलेड खा लेते हो या आधा किलो फ्रूट और वेजिटेबल खा लेते हो, आपका पेट भर जाता है एंड यू डोंट वांट टू ईट टू मच टू सून. ऑन द अदर हैंड आप एक 300 ml का कोक पीते हो, दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ कैलोरीज. बट वो आप देखोगे, आप उसके साथ आप इनफैक्ट कुछ और मांगोगे. आप कहोगे इसके साथ जी पिज्जा खा लेते हैं या इसके साथ जी पॉपकॉर्न खा लेते हैं. मैं इस मामले में आई गिव एन एग्जांपल ऑफ गोइंग टू द सिनेमा हॉल. आप देखोगे अगर आप सपोजिंग सिनेमा हॉल में गए और आपने जाते ही पॉपकॉर्न ले लिए या कोल्ड ड्रिंक ले लिया, यू विल फाइंड के हालांकि 1 घंटा आपने कुछ नहीं किया, यू वर सिटिंग इन ए थिएटर एंड वॉचिंग ए मूवी. जब 1 घंटे के बाद इंटरवल होगा, आप देखोगे 100% है ऑलमोस्ट कि आप दोबारा जाके कुछ लोगे. दैट मे बी अ कोल्ड ड्रिंक, दैट मे बी अ पिज्जा, दैट मे बी पॉपकॉर्न, और आजकल तो कैरमल पॉपकॉर्न आ गए, इवन मोर अट्रैक्टिव. तो
तो इसलिए आप देखोगे कि होता क्या है, these carbohydrates get digested so fast. ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये 1 डेढ़ 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं. सो दे ड्राइव यू टू एक्चुअली ईट मोर. सो आपने कैलोरीज इतनी खा ली पर फिर भी यू वांट टू ईट मोर. ऑन द अदर हैंड आपने खाए गाजर, मूली, व्हाटएवर, एंड आपने उसके बाद खाया कोई सैलेड, कोई फ्रूट, सो ऐसी चीज. उसके बाद आप देखोगे कि आपका तो पेट भर गया. आप तो घंटा 2 घंटे कोई और चीज खाने को तैयार ही नहीं हो. अगर आपको कोई फूड ऑफर करेगा तो आप कहोगे नहीं जी मेरा तो पेट भरा हुआ है. सो अ कैलोरी इज ए कैलोरी, बट अ कैलोरी इज ऑल्सो नॉट ओनली ए कैलोरी. उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. सो द मेटाबॉलिक बेनिफिट ऑफ ईटिंग ए फ्रूट और ए वेजिटेबल और ए सैलेड इज मच मोर. The metabolic impact of having a cold drink or refined carbohydrates, fried foods is very negative, and we have to interpret it all in a holistic picture. So calories are important, but calories आप control तभी कर पाओगे if your overall dietary pattern is healthy. So that is why अगर आपने नाश्ते में दूध ले लिया, फल ले लिया, सैलेड ले लिया, लेट्स से अगर आप अंडे लेते हैं, आपने 1 2 अंडे ले लिए, यू विल फाइंड कि आपका पेट भर गया. अब आपको 5 6 घंटे खाने की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. आप अगर 11 बजे चाय पीते हो, चाय के साथ आप सिर्फ चाय पियोगे, यू विल नॉट लुक फॉर ए स्नैक. बट अगर आप ये जो सो कॉल्ड जंक फूड खाते हो, तो व्हाट यू फाइंड इज कि आपको हर 2 3 घंटे के बाद कुछ खाने को दिल करता है, विच मीन्स यू आर ईटिंग टू मेनी कैलोरीज. इसलिए आपको काउंट करने की जरूरत है व्हेन यू आर नॉट ईटिंग ए हेल्दी डाइटरी पैटर्न. इफ यू आर ईटिंग ए हेल्दी डाइटरी पैटर्न, तो योर बॉडी, योर एपेटाइट विल टेक केयर ऑफ कैलोरीज relatively more simply. आई एम नॉट सेइंग आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको करना पड़ता है, बट वो ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है. बिकॉज जो चीज आप ऑब्सेस होके करोगे, यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम यू विल गिव इट अप एंड यू विल से कि यार ये तो भाड़ में जाए, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता, जो दिल करता है खाओ. सो इसलिए कैलोरीज आर यूजफुल, बट ओनली टू एन एक्सटेंट. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल कैलोरीज आर नॉट द सेम, एंड वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट foods and dietary patterns rather than just calories. Right, sir. So it's possible to eat only potato chips and cold drinks and lose weight. But you can do it only for a week or 2 weeks. You can't do it for your lifetime. Agreed, sir. Agreed. And coming back to healthy and dietary patterns, I think there is a lot of confusion amongst people. What is good fat, bad fat, low carb, right carb, keto diet, right? High protein diet, right? So these are different types of diets. What is your recommendation and view on this, and how should a healthy dietary pattern should look like? Okay. So I think ये सबसे important सवाल है. And if we look at current guidelines, 2 dietary patterns are there which are universally recommended by healthcare associations. वो तो देखो, they are generally good and you should understand them. I'm not saying anything else is bad. Other things also have their plus points, but these two have the maximum published scientific data for them. So पहला है Mediterranean diet और दूसरा है DASH diet. So these are the 2 diets which have the maximum data. Mediterranean diet वो diet है जिसमें के हम लोग ये कहते हैं कि आप एक यूरोपियन पैटर्न ऑफ डाइट फॉलो करो, जो कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो लोग हैं यूरोप में वो फॉलो करते हैं. सो बेसिकली दैट इज ए डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा नहीं है. नॉर्मली आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 60 to 75% ऑफ टोटल कैलोरिक इनटेक हैं मोस्ट लोगों के. स्पेशली अगर आप इंडिया, एशिया, चाइना वगैरह में देखो तो यही डाइटरी पैटर्न है. सो एक तो वो जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अराउंड 50% की रेंज में आ जाएं, इतने ज्यादा ना रहें. दे टेक मोर हेल्दी फैट्स. सो ऑलिव ऑयल बड़ा पॉपुलर है यूरोप में. दे टेक दो सैलड्स जिनमें ऑलिव ऑयल है, and olive oil is considered to be a healthy oil, though it is not extremely suitable for all Indian cooking. इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. But
वो ऑलिव ऑयल लेते हैं, वो फैट्स, वो वाइट मीट्स ज्यादा लेते हैं, दे टेक मोर फिश एंड चिकन, दे टेक लेस ऑफ मीट्स, दे टेक सम एग्स, और बेसिकली वो ब्रेड्स बहुत ज्यादा नहीं लेते, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा नहीं लेते, एंड दे टेक सम वाइन, दे टेक रेड वाइन वगैरह. So basically, they take lesser carbohydrates than we do. They take more healthy fats than we do, and they take some more healthy proteins that we do. And along with, see, they have a generally better lifestyle also. One of the biggest correlates of survival, अगर आप check करोगे, is your social status. The higher your social status, the higher your longevity. So ये एक ट्रेजेडी है लाइफ की जो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कि जो आपका सोशल स्टेटस है, जो आपकी एजुकेशन है, that in many way determines your overall health and your lifespan. So all these are important things. But the first dietary pattern which is recommended is a healthy dietary pattern of the Mediterranean variety, जिसमें के healthy fats पे emphasis है, which means olive oil and nuts. Nuts means बादाम, अखरोट वगैरह. दूसरा जो healthy dietary pattern है, that is DASH diet. DASH diet was created for high blood pressure, hypertension के लिए diet बनी थी. ये स्टडी थी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डैश, उससे बना है. सो इनमें ये थोड़ी उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट है, इसमें सॉल्ट ज्यादा कम किया गया है, और इसमें भी फ्राइड फूड्स वगैरह कम किए गए हैं, इसमें लो फैट डेयरी रिकमेंडेड है, एंड बाकी तो ऑफ कोर्स नॉर्मल डाइट है. सो दिस आल्सो हैज रीजनेबल डेटा. इफ समबडी हैज हाई ब्लड प्रेशर, यू शुड कंसिडर कटिंग डाउन सोडियम अगर आपकी सॉल्ट इनटेक ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली लोगों की सॉल्ट इनटेक गाइडलाइन से तो ज्यादा ही है. सो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक कम करने से फायदा नहीं है, बट हाई सॉल्ट किसी लिए भी यूजफुल नहीं है. सो हाई सॉल्ट तो नहीं लेना चाहिए. रिलेटिवली जो रीजनेबल रेंज है 3 to 5 grams पर डे, दैट्स एन एक्सेप्टेबल रेंज, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सोडियम है पर डे फॉर नॉर्मल पीपल हु आर इन नॉर्मल हेल्थ. इसके अलावा इन दो डाइटरी पैटर्न्स के अलावा बहुत सारे डाइटरी पैटर्न्स आजकल चलते हैं. माय फीलिंग इज दैट यू नो ए सेंसिबल डाइट इज द बेस्ट. मैंने इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स लिखे हैं. आई थिंक यू वुड हैव रेड सम ऑफ देम. आई हैव रिटन ओवर 30 आर्टिकल्स ऑन डाइट, एंड माय फोकस इज डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि इजीली अचीवेबल हो, बहुत महंगी ना हो, एंड आराम से तैयार हो सके, आपको उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन ना करनी पड़े, और वो कन्वीनियंट हो आपके लिए, एंड वो जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में इजीली अवेलेबल हो. सो हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ पे एवोकेडो ढूंढने जरूरी नहीं है, वो इतने स्वाद भी नहीं होते, एंड हमारे यहाँ के नेटिव नहीं है. सो आई एम नॉट सेइंग कि ना खाओ, आप खा लो अगर आप खाना चाहो, पर वो इतनी महंगी होगी जो चीज यहाँ नहीं होती. We don't have to spend money on it necessarily. So otherwise फिर ये diet practical diet नहीं होगी for most people. So a practical diet will have what? The things which we eat every day. उसमें क्या आता है? दाल, सब्जी, फल, सलाद, दूध, दही, पनीर. अगर आपका दूध का सोर्स अच्छा है, दूध भी ले सकते हो. दही, पनीर in any case are very useful. वो जरूर लेने चाहिए. नट्स, अगर आप अंडा खाते हो तो अंडा, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो कपल ऑफ टाइम्स ए वीक चिकन फिश ले सकते हो आप. सो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्दी थिंग्स, ये आप सब ले सकते हो. अवॉइड क्या करना है? मीठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्नैक्स हैं, बेकरी आइटम्स, ठीक है. देन फ्राइड फूड्स, फ्राइड फूड कभी कभार ले लीजिए, बट नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस. सो ये अगर आप चीज कर लेते हो, आप एक लिस्ट बना लेते हो, दीज आर थिंग्स जो मैं आराम से खा सकता हूँ, इसमें मुझे सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे दाल है, सब्जी है, फल है, सलाद है, इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आपने जितना लेना है आप ले सकते हो. ऑन द अदर हैंड देयर आर थिंग्स जो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है. जैसे मैंने आपको बता दिया, मीठा है, एक्सक्यूज मी, मीठा है, फ्राइड फूड्स हैं, ये बेकरी आइटम्स हैं, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड. बीच में आ गई इंटरमीडिएट चीज जो आप
कभी कभार खा सकते हो विद इन रीजनेबल लिमिट। उसमें आपका आ गया, जैसे मैंने आपको नॉन वेज बताया, आप वाइट मीट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली खा सकते हो, रेड मीट्स कम फ्रीक्वेंटली खाने चाहिए। बट मेन फोकस इज कि फ्रेश होना चाहिए चिकन या मीट, अनप्रोसेस्ड मीट होना चाहिए। इट इज प्रोसेस्ड मीट्स विच आर बैड, जैसे कि ये पिज्जा में जो पड़ा होता है, या बेकन है, सलामी है, ऑल दीज आर प्रोसेस्ड मीट्स। इनमें सॉल्ट है, इनमें प्रेजर्वेटिव्स हैं। सो दीज आर मोर अनहेल्दी देन जो चिकन या फिश आप फ्रेश परचेज करके बनवाते हो। ये सिमिलरली एग्स हैं, एग्स इंटरमीडिएट हैं, बट देन एग्स कैन रिप्लेस ए लॉट ऑफ अनहेल्दी स्नैक्स। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर बिस्किट खाने हैं या केक खाना हो, उसकी बजाय आप एक या दो अंडे खा लो, तो दैट इज हेल्दियर देन दैट। सो यू हैव टू सी कि आप किस चीज को किस चीज के साथ रिप्लेस कर रहे हो। बट अगर आप ब्रॉडली ये चीज फॉलो करो कि आप ये हेल्दी आइटम ज्यादा लो, आप अनहेल्दी आइटम्स रिस्ट्रिक्टेड रखो, कुछ इंटरमीडिएट आइटम्स हैं जैसे कि आपका ब्रेड है वो कभी कभार लो, डेली मत लो, रोटी है वो आप बहुत ज्यादा मत लो, अपने वेट के हिसाब से आप डाइटिशियन या डॉक्टर से गाइडेंस ले सकते हो। तो यू विल फाइंड कि आपको कैलोरीज इतनी काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, यू विल रिमेन फुल, you will have energy, and you will not feel like eating in between meals. ये जो need to eat in between meals है, ये को बहुत healthy चीज नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दिन में अगर आपने कुछ खाना पीना है तो क्या करें? उसके लिए यू शुड टेक ब्लैक टी अनस्वीटेंड, या कॉफी आप ले सकते हो दिन में एक दो बार अनस्वीटेंड, सैलेड्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ बिस्किट्स, कुकीज, या स्नैक्स, या ये सेवरीज, नमकीन चीजें, बेकरी आइटम्स, इनकी बजाय चूज नट्स, चूज सैलेड्स, चूज स्प्राउट्स, ठीक है ना, चूज अनस्वीटेंड टी कॉफी, या चूज लस्सी। मतलब चूज थिंग्स विच आर लोकली अवेलेबल, have lesser calories and have some health providing benefits rather than these high calorie things। फिर आप देखोगे कि आपको इतनी कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। While you are telling all these things, सर मेरे दिमाग में अमृतसरी कुलचे, न्यूट्री कुलचा, कान्हा दी पोड़ी, ये सारी चीजें मेरे दिमाग, मक्खन दी फिश, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी। आपकी लिस्ट में उनका तो नाम ही नहीं आया, तो when will people eat that? ओके, उसके लिए मैंने रखा हुआ है कॉन्सेप्ट चीट मील का। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, ये बताना रह गया इतनी डिटेल में कि मोस्ट जो डाइटिशियंस हैं या मोस्ट जो डाइट्स हैं, उनमें चीट करने की कहीं पे इजाजत ज्यादा है नहीं। होता क्या है कि जब आदमी एक या दो दिन शादी ब्याह पे गए, बर्थडे पे गए, किसी डिनर पे गए, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि आज मैंने बहुत खाया, आज मैंने बहुत पिया, आज बहुत बदपरेजी की। अगले दिन आप देखते हो वेट आपका कुछ बढ़ गया, यू बिकम डिप्रेस्ड, एंड आप कई बार डाइट ही डिरेल हो जाती है इस चक्कर में कि जी आप कहते हो कि नहीं यार छोड़ो, कोई फायदा नहीं, मेरा तो बॉडी ही ऐसा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, छोड़ दिया मैंने नहीं अब कोई परहेज करना। दैट्स नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। इसके लिए मैंने जब अपनी ये डाइट के बारे में आर्टिकल्स लिखे थे, मैंने सजेस्ट किया था कि कीप a concept of one cheat meal every week। अगर आपको वेट लूज करना है तो हफ्ते में एक चीट मील से ज्यादा ना लो। उस चीट मील में विद इन रीजनेबल लिमिट्स यू ईट व्हाट यू वांट टू ईट। जैसे आज आपको केक नजर आया, आपका दिल किया केक खाने का, तो आप ये सोच लो कि मैंने सिर्फ संडे शाम को खाना है या संडे सुबह खाना है, वट, या सैटरडे शाम को मेरा स्पेशल मील है फैमिली के साथ, उस दिन मैंने खाना है। अगर आपको पता होगा तो आप उसको आज रेजिस्ट कर सकोगे, बिकॉज आपको पता है कि मैंने हफ्ते में एक दिन ये वाली चीज खा लेनी है। अगर आप आज किसी ऐसी जगह पे गए हो वेयर यू फील इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, आपके ब्रदर की मैरिज है, या आपके बच्चे की मैरिज है, या आपके बच्चे का बर्थडे है, या कोई और चीज है, यू नो कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आई पार्टिसिपेट फुली, तो आप आज खा लो। बट देन रिमेंबर कि इस बार सैटरडे को नहीं खाना, बिकॉज हमने आज खा लिया है। ये अगर आपके पास एक चीट मील की इजाजत हो, तो देन यू विल फाइंड के रेस्ट ऑफ द वीक यू विल स्टे हेल्थियर।
सिमिलरली अगर आपके पास वेट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, आप इवन एक चीट डे रख सकते हो। दैट मीन्स जैसे संडे को आप 2 मील बद परहेजी कर सकते हो। दैट इज इफ यू हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड आपका वेट सही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अदरवाइज वन चीट मील आई थिंक almost anybody can afford to take, and that keeps you clean for the rest of the week. ग्रेट सर, आई हर कि ये दुकानें भी चलनी चाहिए, तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट commonly asked question, is alcohol good for health? Is wine, you mentioned wine, right? क्या daily wine पीना, right? Wine, फिर whiskey, vodka, what is your take on that? So, Gaurav, I must give you disturbing news. लास्ट 2 years में 2 बार आर्टिकल्स आ चुके हैं। एक ना ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी आती है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट ऑफ कोर्स, बट हमारे लिसनर्स के लिए ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। हर साल इनके ये आर्टिकल आते हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इसमें जो 195 कंट्रीज हैं दुनिया भर में, उसमें लोगों की हेल्थ के ऊपर डेटा इकट्ठा करके बोला जाता है। तो उनका रिसेंटली पिछले 4 सालों में 2 आर्टिकल्स आ चुकी हैं अल्कोहल पे। सो ईच टाइम उन्होंने जो कंक्लूजन लिखा है, कंक्लूजन तो ये है, द नेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट कोरिलेट्स विद गुड हेल्थ इज 0। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, क्या आप अल्कोहल ले सकते हो? सो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, जो आई थिंक लेट लास्ट ईयर आई थी या अर्ली दिस ईयर आई थी, दे से कि जी आप अल्कोहल आपको पहले 45 साल की उम्र तक तो लेनी ही नहीं चाहिए। That means even if you have to start, you have to start once you are middle aged. Why? Because they found that in males aged between 15 to 45, alcohol is the third most common cause of morbidity and mortality. So हम लोग को लगता है सिर्फ alcohol related problems like cirrhosis, but no, actually it is much more. Social problems, divorces, domestic violence, traffic accidents, infections, even TB ka risk is much higher in young people who take too much alcohol. So it's not a simple thing कि जी सिर्फ alcoholic cirrhosis है और कुछ नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और एंड इसलिए अगर आपको लेनी है अल्कोहल, जिस लेवल पे अल्कोहल का कोई बेनिफिट है, वो लेवल है 1 to 2 ड्रिंक्स 10 ग्राम्स वाले, यानी कि 30 ml का विस्की का पैग 1 to 2 times ए वीक। इस लेवल पे उनकी हेल्थ पॉसिबली बेटर हो सकती है देन नॉर्मल इंडिविजुअल्स हु डोंट ड्रिंक। बट वंस यू गो टू 1 ड्रिंक एवरी डे, द लेवल द बेनिफिट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, एंड देयरफॉर उसके बाद तो नुकसान ही नुकसान है। सो एक तो बहुत यंग लोगों को विस्की नहीं लेनी चाहिए, वो उनका कंट्रोल वैसे भी कम होता है एंड उनके लिए कोई फायदा नहीं है। जो फायदा है वो 40-45 की एज के बाद मॉडरेट ड्रिंकिंग 1 to 2 times ए वीक का है। डेली ड्रिंकिंग इज नॉट यूजफुल, उसका तो नुकसान ही नुकसान है। एंड अल्कोहल के और कई सारे नुकसान हैं अपार्ट फ्रॉम लिवर डिजीज विच आई जस्ट मेंशन्ड। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत लो, बंद कर दो, बट उसको विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स रखो, बिकॉज बियॉन्ड ए लिमिट it has no benefit and it may harm, and at lesser levels than you think. Thank you, sir. In the last 50 minutes, we have had this video shared almost 100 times. And at any given point of time, we had 20 to 25 people live listening to us. So I know you are a very, very busy cardiologist. I will not take much of your time. I'll just quickly wind up with 2-3 more questions. You spoke about very interestingly Mediterranean diet, and you said olive oil, fish, chicken, and 50% carbs. Now, if I have to Indianize this Mediterranean and say that I have a fish curry cooked in olive oil with rice and a lot of salads, does that work? It works. प्रॉब्लम थोड़ी ऑलिव ऑयल और इंडियन कुकिंग की है। मोस्ट ऑलिव ऑयल्स जो हैं अवेलेबल, उनका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो लो है। इंडियन डाइट जो है वो फ्राइंग में या हाई टेम्परेचर कुकिंग में बिलीव करती है। जो यूरोपियन डाइट है, दे डोंट फ्राई फूड्स द वे वी डू,
दे टिपिकली बेक आइटम्स या वो रॉ लेते हैं चीजों को, उनके ऊपर वो ऑलिव ऑयल सोक कर देते हैं, थोड़ा ऑलिव ऑयल छिड़क देते हैं, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो दैट इज द वे ऑलिव ऑयल इज सपोज टू बी हैड. हमारा ज्यादातर खाना जो है वो उस तरह नहीं बनता. सो एक दो वेराइटीज हैं ऑलिव ऑयल की जिनका स्मोकिंग पॉइंट हायर है. एक पोमेस वेराइटी है जैसे, उसका स्मोकिंग पॉइंट हायर है, वो इंडियन कुकिंग में यूज हो सकती है. बट मोस्ट ऑलिव ऑयल्स आर मेंट फॉर स्प्रिंकलिंग ऑन टॉप ऑफ फूड विच इज ऑलरेडी कुक्ड एंड नॉट फॉर फ्राइंग और हाई टेम्परेचर कुकिंग. एक तो ये इशू है. सो उसके अलावा वी कैन हैव अदर हेल्दी ऑयल्स. उनमें आ जाते हैं जैसे ना ये देर आर सम प्रोप्राइटरी ब्रांड्स लाइक ये सफोला गोल्ड है, सन ड्रॉप हार्ट है. इनमें कुछ एडवांटेजेस हैं, इनकी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको लिया जा सकता है. सो ऑलिव ऑयल के बाद वो यूज हो सकते हैं. देन तीसरी चीज राइस ब्रान ऑयल इज रीजनेबली गुड, वो यूज हो सकता है. देन मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल अगर अच्छा हो वो बड़ा हेल्दी हो सकता है. सो ये तीन चार ऑयल्स लेने चाहिए एंड रोटेशन होनी चाहिए. एक ही ऑयल नहीं सारी जिंदगी खाना चाहिए, ऑयल बदलते रहने चाहिए, जैसे हर महीने कोई और ऑयल मंगा लिया. सो इन चार पांच हेल्दी चॉइसेस में, एंड अगेन कीप ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट. इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, सो बहुत ज्यादा नहीं लेना होता. फाइनली आई विल गिव यू वन कंफर्ट थिंग ऑल्सो, विच इज के अगर आपने फ्राइड फूड खाना ही है तो फिर जो कन्वेंशनल इंडियन ऑयल्स हैं दे आर मच बेटर. सो उसमें क्या आता है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये चारों ऑयल्स ऐसे हैं जो इंडिया में कॉमनली यूज्ड है. सो अगर आपने सपोजिंग हफ्ते 15 दिन में एक फ्राइड चीज कुछ खानी ही है तो दीज आर मच हेल्दियर देन दी अदर ऑयल्स. ये जो मैं आपको बता रहा था सफोला गोल्ड या सन ड्रॉप हार्ट या ऑलिव ऑयल, दे आर नॉट गुड फॉर फ्राइंग, दे आर गुड फॉर जनरल कुकिंग. सो फ्राई करने के लिए यही पुराने इंडियन तेल अच्छे हैं, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. क्यों? क्योंकि ये डीजनरेट नहीं होते एट हाई प्रेशर्स. बाकी सारे वो डीजनरेट होके उनके सो कॉल्ड जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं वो उड़ जाते हैं स्टीम में. एंड उनमें डिजनरेशन के बाद कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अनहेल्दी हैं. ट्रांस फैट्स बनते हैं फ्राइंग से. एज यू नो ट्रांस फैट्स पे बैन है आजकल. तो ट्रांस फैट जीरो करने का फोकस है. जीरो करने तो चलो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हमें ट्रांस फैट्स कम करने चाहिए. एंड फ्राइंग से ट्रांस फैट्स जनरेट होते हैं. और अगर हम सेम ऑयल बार बार फ्राई करते हैं, जैसे कि घरों में कई बार किया जाता है और स्पेशली हलवाइयों की दुकान में किया जाता है कि उसी ऑयल में और ऑयल ऐड हो ही जाता है, उसी में और पूरियां तली जाती हैं और समोसे तले जाते हैं. सो दैट इज नॉट वेरी हेल्दी. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. सो माय मैसेज टू यू इज use these healthy oils for general cooking, avoid fried foods, take them irregularly, intermittently, kabhi kabar. When you have to take them, use traditional Indian oils which are good for frying because they don't degenerate on frying. Thank you, sir. It was a very, very interesting Saturday afternoon. I think your nuggets of wisdom will really help our viewers because it was very, very simple, as you said. Your message of having eat what we have been eating for centuries, right? Don't go for food fads. Eat what is fresh, eat what is available, eat what is economical and affordable, right? And eat as much as you want. Don't eat because somebody told you to eat more or eat less, right? I think that was very, very crisp and very, very easy to understand. People complicate diets, right? So thank you so much, sir. Thank you for spending this time for us, right? As I told you, many people have already benefited from this webinar of ours, and the next 24 hours, this will be almost being circulated on our Facebook and YouTube channels, where many more people can benefit for that. Thank you so much for your time, sir. Thank you, Gaurav. I think we had a very interesting conversation. It was nice, of course, talking to you and interacting with you after quite a lot of time. But it's very interesting to listen to the problems which people face. And diet has become so controversial because there are so many views. And there are so many people giving so many views, and they are all, opposite to each other. What was unhealthy yesterday is healthy today. What was healthy yesterday has become unhealthy today. And tomorrow we may see in another reversal.
So it is extremely important to keep things simple, to try and understand basic concepts and not run around trying to get diets from here and there. Try to make a suitable diet plan at home. It is achievable by all. And of course, once in a while, maybe one meal a week, enjoy, eat what you want to. Then you'll stay healthy the other 6.5 days. That's my message. Thank you, sir. Thank you so much for your message. Thank you. Thanks. Bye. Bye, sir. Bye.